Central bank is our new topic. In the previous class, we have seen classifications of bank. Bank is classified in two categories. First is commercial bank and second is central bank. Commercial bank and its functions we have already seen. Now today we will begin within second classification, which is central bank. There exists a central bank in all countries of the world. Each country have one common central bank which manage, evaluates and regulate the banking activities in the entire world. Yes, the main duties and functions of the central bank is to manage the work, evaluate the functionings and to regulate the daily activities of all the bank working in country. Besides a bank, central bank protect the interest and rights of customers of various bank and of the general public. What it has been said that central bank protect the interest and rights of the customer. Yes, that is the central bank. The work of the central bank is to work for the welfare of the people who are holding different types of accounts in different bank in different states. R.P. Kane defines a central bank as the institute charged with the responsibility of managing the expansions and contractions of volume of money in the interest of the general public welfare. Expansion and contractions of the money, just underline this. What is the work of central bank? The central bank is an institution that is charged with responsibilities of managing the expansions and contraction. Yes, money supply ko expansions means what? To increase the supply of money in economy as per the need of society or as per the need of a economy. ओके जब भी पैसे की नीड हो इकोनॉमी में तो पैसे की सप्लाई को इंक्रीज करना वो होता है एक्सपांशन. एंड इफ मनी सप्लाई इज मोर इन द मार्केट तो वो तो वो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मनी करती है, मतलब कि सप्लाई कम कर देती है. वाई एक्सपांशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मनी इज डन टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ करेंसी रेट इन इकोनॉमी. क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा होगा पैसे का तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और अगर पैसा कम होगा तो वो इन्फ्लेशन हो जाएगा. सो टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मनी इज डन. Okay, keeping in mind the interest of a general public welfare. Hence, central bank is the apex banks of a country whose function is to aid, regulate and promote the entire money market and the banking sector. It is an apex bank of a country because it holds in topmost positions in the country. And its function is to aid, regulate and promote the entire money market and the banking sector as well as to maintain the monetary financial stabilities for overall economic goods of a nation. That is, उसका मेन काम यही है एपेक्स बैंक का कि देयर शुड बी नो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी. तो जब वो शॉर्टेज होगी तो वो सप्लाई करेगा, दैट इज़ वो एक्सपांशंस ऑफ मनी करेगा, और जब पैसे बढ़ जाएंगे मार्केट में तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा. सो टू मेंटेन द स्टेबिलिटी. ओके, जस्ट टर्न योर पेज नंबर 40. Mobilizations of money has several macroeconomic implications which impact economic growth and development of nation. Yes, mobilizations of money means what? Moving money from one place to another. It have a lot impact on economic growth and development of a nation. So the responsibilities of the regulating monetary or the financial transactions in a country and maintain the value of a country's money or the currency rest with the central bank. तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेंट्रल बैंक की कि टू रेगुलेट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री ताकि वैल्यूज ऑफ द करेंसी डज नॉट गोज टू हाई और द वैल्यूज ऑफ द करेंसी डज नॉट फॉल डाउन. In order to fulfill this responsibility, a central bank formulates a monetary policy. In short, a central bank assumes the responsibilities of maintaining economic stability. So it is in responsibilities of the central bank to do an expansions and contractions of the money in the market, to regulate the entire money market. So with the in the interest of general public welfare, so that the economic stability is maintained in an economy. A central bank also provide monetary or financial advice
एंड सजेशंस टू द गवर्नमेंट। तो ये एक ऐसी बैंक है जो मॉनिटरी एज वेल एज सजेशन और एडवाइस गवर्नमेंट को देती है। Now we all know that we have one central bank in our India which is known as in Reserve Bank of India. The central bank in India is also known as in Reserve Bank of India. Under the Reserve Bank of Indian Act 1934, the Reserve Bank was established on April 1st 1935. This is very necessary क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है कि अगर एस्टेब्लिश्ड आया तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1st April 1935 with private paid up capital ₹5 crores, but it was nationalized on 1st January 1949. Yes, अगर nationalized आया, when was Reserve Bank of India nationalized? So 1st January 1949. When it was established, the 1st April 1935 with paid up capital of with private paid up capital of ₹5 crores. Okay. Reserve Bank of India is an apex bank of India which supervise and regulate the entire banking sector as well as formulate the monetary policies of India. Yes, as same we have seen, हमारे यहाँ रिजर्व बैंक का क्या काम क्या है, तो टू सुपरवाइज एंड रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग सेक्टर्स, मतलब कि जितने भी बैंकिंग है, जितने भी बैंक है, ओके, उनको रेगुलेट करना, उनको सुपरवाइज करना एंड टू फॉर्मुलेट द मॉनिटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शंस क्या है? तो फंक्शंस इज अगेन कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज. फर्स्ट इज मॉनिटरी फंक्शंस which will be related to the money. Second, on page number 41 is non-monetary functions which will be not related to the money. Okay, first one is currency issue. Reserve Bank of India currency issue करती है, but it has been said that Reserve Bank of India has a sole right to issue notes of denomination starting from ₹2 and above. Okay, 2 rupees से लेकर जितने भी नोट्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास राइट्स है कि वो उसको इशू करती है. बट करेंसी नोट्स ऑफ ₹1 एंड ऑल करेंसी कॉइन्स आर इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. ओके, ₹1 का नोट और सारे कॉइन्स, ऑल द कॉइन्स आर इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. इट इज़ ओनली इशूड. ओके, बट the distribution of ₹1 notes and currency coins is done by the Reserve Bank of India as an agent of government of India. लेकिन distribution कौन करता है उसको? Reserve Bank of India ही करती है. ओके, सो issues of currency में क्या है कि ₹1 currency note and all the coins are issued by the finance ministries of India, and all other notes are issued by starting from ₹2 are issued by the Central Bank of India. But still the distribution power lies only in the hand of Reserve Bank of India, who is working as an agent for the government of India. Second is banker to the government. The Reserve Bank of India is a banker, advisory and agent of the central government and of all the state government. It manages government bonds, government accounts, currency coins and notes of ₹1 and also provide loans to the government. Yes, banker to the government क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के सारे बॉन्ड्स, अकाउंट्स, करेंसी कॉइन्स एंड नोट ऑफ ₹1 आर managed by an Reserve Bank of India. That is why it is known as a banker, advisory as well as an agent to central as well as to all the state government. Third is bankers bank एंड लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. बैंकर्स बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिजर्व बैंक सारे बैंक के ऑल द बैंक वर्क अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इन बैंकर्स बैंक. एंड लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मीन्स व्हाट? के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इमरजेंसी में it is helpful to all the banks whenever there is an emergency. So it is a lenders of the last resort queue, because when there is no one to help, the last hope is the Reserve Bank of India. See, the Reserve Bank of India is a bankers and regulator of all the scheduled bank in the country. Yes, it is a banker क्योंकि ये सारे बैंक
को रेगुलेट करती है and regulate all the scheduled bank in the country. It manages the cash reserve of बैंक मतलब के सारे बैंक जितने भी हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं. डिटरमाइंस द डायरेक्शंस ऑफ क्रेडिट, कितना लोन देना है कितना नहीं देना है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डायरेक्ट करती है. एज वेल एज डायरेक्ट द क्रेडिट पॉलिसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. जब भी हमको लोन मिलती है डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो दैट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट इज़ ऑल्सो द लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फॉर द शेड्यूल्ड बैंक इन केस ऑफ इमरजेंसीज. मतलब सारे बैंक को जब भी हेल्प चाहिए तो एक ही होप है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एन लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. द फोर्थ पॉइंट इज क्रेडिट कंट्रोल. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया controls the process of credit creations and money supply in the economy with the help of various tools of monetary policy. What is monetary policy? We will see it in the next class. Okay, but रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सारे क्रेडिट को कंट्रोल करती है ताकि मनी जो है वो उसका सप्लाई नहीं ज़्यादा हो और मनी का सप्लाई नहीं कम हो. दैट इज़ एक्सपांशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी मेंटेन. यस, क्योंकि एक्सेस सप्लाई होना वैल्यू मनी की वैल्यू को कम कर देता है और कम सप्लाई होना मतलब कि इन्फ्लेशंस को बढ़ावा देता है. सो दैट इज़ वाई इट हैज़ टू सी दैट द वॉल्यूम ऑफ सप्लाई इन द इकोनॉमी मेंटेन एंड the expansions of contraction is to be done as per the needs in the economy. Okay, next is custodians of foreign exchange reserve. The Reserve Bank of India has the responsibilities of maintaining the value of rupee. Yes, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैल्यू ऑफ मनी बनी रहे, ना ही करेंसी की वैल्यू कम हो. यस, अवर्स other countries under the fixed exchange rate regime, under free exchange rate system where exchange rate is determined by the market, Reserve Bank of India maintain the value of Indian currency by buying and selling the foreign exchange in open market as and when required. मतलब कि कैसे वो करेंसी रेट को कंट्रोल करती है. हमने बोला ना एक्सपांशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस करके, मतलब कि यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन द वैल्यूज ऑफ करेंसी बाय बाइंग एंड सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज इन द ओपन मार्केट. यस, अगर हमको सप्लाई कम करनी है मार्केट में पैसे की तो ये क्या करेगी, ओपन मार्केट में सेल करेगी और करेंसी को परचेज कर लेगी. ओके, और वाइस वर्सा विल बी द केस. अगर सप्लाई को बढ़ाना है तो वो, और अगर फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू, अगर फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही है, ओके, मीन्स व्हाट कि फॉरेन करेंसी ज़्यादा है तो वो ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है. और अगर आउटफ्लो करना है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी नहीं है मार्केट में, तो वो सेल कर देती है. दिस इज हाउ एन फॉरेन करेंसी इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज मेंटेन बाय एन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो इट इज़ वेरी क्लियरली गिवन दैट रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन द वैल्यूज ऑफ इंडियन करेंसीज बाय बाइंग एंड सेलिंग वेन एवर देर इज नीड. अगर आउटफ्लो करना है तो वो सेल कर देगी, अगर इनफ्लो करना है तो वो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को ओपन मार्केट से बाई कर लेगी. Okay, the Reserve Bank of India is also the custodians of Indian reserves of foreign currency. That is, Reserve Bank of India have a right to hold a foreign currency in its custodian. It also administrate the foreign exchange reserve by checking the inflow and outflows of the foreign exchange. जैसे कि मैंने बोला कि इनफ्लो और आउटफ्लो पे उसकी हमेशा आई रहती है टू नो दैट इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आउटफ्लो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टू मेंटेन द वैल्यूज ऑफ इंडियन करेंसीज इन आवर इंडियन इकोनॉमी. ओके, सो दिस वॉज योर monetary functions of Reserve Bank of India. Now we will move on page number 41 where we will study the non-monetary functions of Reserve Bank of India. Second functions of central bank is non-monetary functions of Reserve Bank of India. It is having in 3 heading. Regulatory and supervisory functions. Reserve Bank of India supervises the functionings of the entire financials and money market, which includes branch expansions,
and methods of working of the scheduled bank, working of non-banking financial companies, and of cooperative bank. It has been said that Reserve Bank of India supervise the functionings of the entire financial, मतलब जितने भी बैंक है, okay, it regulates them, it see the functionings of them, and money markets में भी वो देखती है कि money की inflow and outflow बनी रहे, which includes an expansions, and it also see that wherever there is a need, branch hence to be expanded. Different बैंक का जिस एरिया में बैंकिंग की नीड है वो एरिया में बैंक को ब्रांच एक्सपांशन करना. मेथड्स ऑफ द शेड्यूल, वर्किंग ऑफ द शेड्यूल बैंक मतलब कि सारे बैंक जो है वो कौन से डायरेक्शंस में काम करेंगी. वर्किंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन व्हेन इट कम्स टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो कौन कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं. मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस, दीज आर सम ऑफ एन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल companies. And it also sees to the cooperative bank. So this is a first functions, which is a regulatory and supervisory function. Second is promotional function. Even today there are many people in India who do not hold a bank account. They depend on unorganized money market for their credit needs, make business related payment in cash rather than by check, owing to which it is difficult to know the exact values of transaction taking place in the country. Yes, even today we have seen that many people, especially on the rural side, the people does not have a bank account. Yes, they do all the transaction is in cash. Whenever they are in need of money, yes, they take it from an unorganized money market, मतलब कि they take it from the शाहूकार shops, वो लोग जो होते हैं उनसे इंटरेस्ट पे लेते हैं, विच मेक अस डिफ़िकल्ट टू नो देन एग्जैक्ट मनी ट्रांजेक्शन्स और द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन अवर इकोनॉमी, एंड इट बिकम difficult to ascertain the exact value of money or arrive at an actual figures of a national income. Here Reserve Bank of India tries to create banking awareness among people. Okay, here Reserve Bank of India tries to create in banking awareness among the people, encourage branch expansion in rural area, and promote setting up of cooperative bank in the interest of people. It make efforts to get more and more people under the organized money market. What it has been said, so Reserve Bank of India का ये एक फंक्शंस है वेर इट ट्राइज टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल, स्पेशली ऑन द रूरल साइड, टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल by giving them different types of advantages, so that they do not purchase the or they do not take a loan from an unorganized money market. That is why the Reserve Bank tries to promote its do the promotional functions, so that each and every people in the country have at least one account in their favor. Okay, it also encourage the branch expansions, मतलब कि स्पेशली ऑन द रूरल साइड जहाँ पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा है वहाँ पर वो ब्रांच एक्सपांशंस करती है ताकि ईच एंड एवरी वन गेट एन फैसिलिटी इन देयर ओन एरियाज. एंड ऑल्सो प्रमोट द सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक स्पेशली फॉर दैन एग्रीकल्चर पीपल हैव बीन ओपन टूडे, फ्रॉम वेयर दे कैन गेट एन एग्रीकल्चर लोन एट वेरी लेट ऑफ इंटरेस्ट, very low rate of interest compared to an unorganized money market. It make efforts to get more and more people under organized money market. What is organized money market? कि जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो बैंकिंग के थ्रू हो रहे हो, ये ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है. सो दैट वी विल कम टू नो एन एक्चुअल figure of our national income by the transaction taking place in our Indian economy. The third is financial inclusions and development. The last non-monetary functions of Reserve Bank of India is financial inclusions and development. India is a country with huge degree of economic diversities and rural-urban divided, and hence whenever major economic reform and changes come about, it is necessary that people and economic unit of all the segment receives benefit of such changes. Yes, we have seen that there is always an income inequalities in our economy. Yes. So it is functions of the Reserve Bank of India to see that each and every one is included when it comes to an development. ऐसे नहीं होना चाहिए कि the development should always be more on the rural side or more on the urban side compared to the other. So it is in Reserve Bank of India to see that all the segment receives a benefit. For such inclusions, Reserve Bank of India continuously make efforts in the banking sphere. It provides special credit facilities to the priority sectors like agriculture, small scale industries, self-employed people,
traditional and cottage industries in etc. Yes, it provides more benefit to such small scale industries or the agriculture people, so that they also get interested in the banking sphere, open their account, and take various types of loans or advantages provided to them related to their work. It also make efforts to increase information flow and enhance awareness regarding banking among the masses. Yes, as I have told you कि फर्स्ट सेकेंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था प्रमोशनल फंक्शंस में कि अभी भी रूरल साइड बहुत सारे ऐसे अकाउंट पीपल है who does not hold in bank account. So that is why it is doing in promotional functions, so that each and everyone at least have in one bank account. So it also see that awareness is created regarding in banking industries in our economy at a massive space. In the present time, Reserve Bank of India manages the Prime Minister Jan Dhan Yojana. What is Jan Dhan Yojana? It has been open. It is an account where a person can open his or her account if they do not hold it at 0 rupees. That is, ये एक ऐसा अकाउंट था जहाँ पर आपको कोई भी without any money you can open it, that is within zero balance. Okay, the main aim of Jan Dhan Yojana was that the people who does not hold any bank account come and open their account, and the बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जितने भी वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो बैंकिंग के थ्रू हो, सो दैट वी विल कम टू नो अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लोज ऑफ अवर नेशनल इनकम. Reserve Bank of India also work towards protecting the interests and rights of the consumer. As I have told you before that it is working for the interest for the customers who is holding a different account in the different bank. It publishes all type of banking related information and statistic as well as expert articles in order to promote research related to the banking and monetary improvement in the country. जितने भी banking and on the other Reserve Bank of India's website, people will get free access to such information. Means what? Whatever informations we need related to the Reserve Bank of India, it publishes all on the authentic website. So whatever informations we want, we can get it related to the research, related to the banking, related to the monetary improvements. Yes, different statistical data, different experts article, all such informations you can get it from an authentic website of Reserve Bank of India. So this was in non-monetary functions of Reserve Bank of India.